very tall. I think मेरी नजर जाती थी लंबा लड़का है तो and you get all like red and hot when that person's around you. I think he was very possessive. Never be in love with someone who you think ये बन जाएगा. अगर नहीं चेंज हुआ तो आपके लाइफ के पहले प्यार के बारे में बताइए. I think was someone in school. 5th 6th standard तो नहीं था मेरा, काफी लेट था. But yeah, the crush. As काफी you say. late, मतलब काफी late meaning maybe like 9th 10th or 11th was it, somewhere around that. Okay. yeah 14 15 16 something like that. ट्यूशन फ्रेंड. ट्यूशन फ्रेंड नहीं, स्कूल में ही था. अच्छा, कोएड स्कूल. स्कूल में हाँ, मेरा कोएड स्कूल था. ऐसी कोई परेशानी नहीं थी मुझे लाइफ में. हाँ, सो स्कूल में ही था. एंड वेरी टॉल. आई थिंक मेरी नजर जाती थी लंबा लड़का है तो He'll suit me. आई थिंक वो सबकॉन्शियसली आप मतलब मैं थोड़ा एक लेवल के ऊपर ही देखती हूँ ना फिर अपनी हाइट के हिसाब से, तो मेरे को नीचे थोड़ा कम दिखता था. सो इफ समवन्स टॉल आई वुड नोटिस like because I'm tall. That kind of romance was so like, and now we call it kindergarten romance or whatever. But जब आप को नाम नहीं पता है, फिर आप नाम फिगर करते हो, फिर आप दूर दूर से you know in that assembly line में देख रहे हो, or you want to go around their class, you know, just to like see, and you get all like red and hot when that person's around you and start blushing. People are teasing you with that person's name. लेक्चर के दौरान आप स्टेयर करते हो until they stare back a little bit. And हाँ, that also. So that person was not in my class. He was in a different section. Okay. But that has its own charm, huh? That because then you look go for- around that person's class and you suddenly see him and break notes कब आएगी? exchange, or and then you suddenly like you talk for the first time, you know, that conversation, not knowing, like complete stranger, and exchanging numbers. उस टाइम पे ना मैं अपनी मॉम के साथ एक मोबाइल शेयर करती थी, जो मतलब मुझे घर जाने के बाद मिलता था बेसिकली. तो मेरी मॉम कॉलेज जाती थी, सुबह से उनके पास होता था वो मोबाइल, फिर जब मैं घर पहुंचती थी तो वो मोबाइल मेरे पास होता था. हाँ, और कई बार मैसेज आ गया, वो सारे मैसेज डिलीट करना बाद में. लैंडलाइंस, अब तो मेरे लैंडलाइन है ही नहीं इस घर में. लैंडलाइंस जब होते थे तो वो इधर से भी उठता है उधर से भी उठता है सेम नंबर. उस इंसान ने अगर कॉल कर लिया, और मैं ना अपनी माँ के सामने झूठ बोल ही नहीं पाती थी. मतलब आई थिंक माई सिस्टर वॉज ब्रिलियंट एट इट, बट आई वॉज द वन हु शी वुड कैच इन अ जिफी दैट कुछ गड़बड़ है. किसका फोन था? ब्रेकअप क्यों किया? मतलब आई थिंक वो उस टाइम पे इट्स वेरी फ्रिवलस. I don't think it's that deep. I don't think it was deep, though I cried. Okay. It wasn't deep. But it wasn't like what I would call a proper relationship. Like, you know, now when you look back, it was that school wara crush. तो पहली relationship. Yeah, I think he was very possessive. Talk about school crush. Huh. Yeah, this possessiveness has been there, huh, I feel. That's your type. That's the type you attract. See, you realize your pattern after some time, okay? And then you realize what not to do. This is what I should break my pattern or not go for my pattern. I think it's a conscious effort. When someone you hear uska perception kuch aur hai, you know, or is not considered to be the best guy or whatever, but that person with you is very sweet and very nice, then you suddenly feel like, oh, maybe I am having this effect on this person. But ये ना एक चाल भी हो सकती है. ये टिकता नहीं है. I feel you can never change a person. Yeah. And also, sometimes you realize that maybe you were in love with a version of a person that you thought he would become. You know, ये हो जाएगा, ये बन जाएगा, या ये ऐसा कर सकता है. You know, ये change हो रहा है. But that's wrong. That's wrong on your part also. Why do you want to change the person? So never be in love with someone who you think ये बन जाएगा. अभी क्या है? Do you love that person जैसा वो अभी, अगर नहीं change हुआ तो